Now time for Yogi Raj 2.0. BJP's mega Mukhyamantri returns. Double engine dhamaal in Lucknow. Modi to electrify Yogi's swearing in. Giant hopes of NAYA Uttar Pradesh. Coronation 2.0 cements Yogi's SHAKTT. Monk in SAFFRON lights up path to 2024. Bulldozer Yogi 2.0 begins. क्या नारा लगा रहे हैं? रितेश सिंह। रितेश सिंह। अरे भाई नारा क्या लगा रहे हैं रितेश जी? रात किलो की करो तैयारी, आ रहे भगवाधारी। रात की तिलक की तैयारी, आज तिलक की करो तैयारी। आ रहे भगवाधारी। भगवाधारी। आप कहाँ से आए हैं? बनारस से। बनारस से आए हैं। बनारसी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यह काशी के लोगों का प्रेम है पार्टी और माननीय मोदी जी के प्रति। हम यहाँ इस धूप में भी आकर और अपने उत्साह को प्रकट कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी के कार्डर हैं, प्रवक्ता है या ऐसे ही बनारसी वासी हैं? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता है भाजपा के, और भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा बनारस में है। लगातार कार्यकर्ता हैं। 25-30 साल से लगातार वहाँ भाजपा का गढ़ बना हुआ है और कोई पार्टी भाजपा बनारस में नहीं है। चलिए, तो आप सब क्या बनारस से? Everywhere you go, you'll find these little cadre pockets which have come from various parts of Uttar Pradesh. But let's take you now on the reason that we are here. This is the BJP headquarters. The crowds now are going to be thinning very fast because the action is going to shift to the Chief Minister's residence, where there is going to be a bit of a chai party, is what we are being told, for all the MLAs. The decision, we believe, has already been made. At the coronation, there will be 2 deputy CMs and 1 CM. We all know that the legislative party head is Yogi Adityanath, who was appointed yesterday without anyone saying anything at all, unanimously at that. On the other hand, what we are expecting, it's a list in terms of the guest list, which is interesting to say the least. A lot of industrialist viewers, a lot of celebrities. One interesting name that has cropped up is that of Amitabh Bachchan. Why interesting? Primarily the fact that his wife is Jaya Bachchan. She is a Rajya Sabha MP from Samajwadi Party and was highly vocal through the campaign and through the elections. Will he come? Well, we don't quite know. But there will be a set number of industrialists and some celebrities as well. Let's try and get in a quick reaction more from... कहाँ से आए हैं बाबा? मैं राजस्थान तो आया हूँ। आप राजस्थान से आए हैं? यहाँ पर कैसे हैं राजस्थान? राजस्थान आश्रम मल्टी लेवल पार्किंग में है वहाँ। तो आप वहाँ कहाँ से आए हैं राजस्थान? उदयपुर से आए हैं। कार्डर हैं बीजेपी के, प्रवक्ता हैं? जी जी। यूपी के चुनाव में राजस्थान से आए? इधर ही साइड रहते हैं, बाबा के ही शरण में रहते हैं। शरण में रहते हैं। चलिए, आप कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से आए? नरसिंहपुर जिला है मध्य प्रदेश में, और प्रवासी के नाते हमने 2 महीना मैनपुरी जिले में दिया हुआ है। अच्छा। और संगठन का पूरा काम किया। संगठन का काम जी। और समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था उसमें हमने सेंध लगाई है, और 4 में से 2 विधानसभाएं हम लोग जीत कर आए हैं। जी, और अगली बार जो है कहाँ से हैं बताइए? हम लोग गोरखपुर के बगल में एक महाराजगंज जिला है, महाराजगंज से है। आप महाराजगंज से? बिलकाप में गई हूँ महाराजगंज। अच्छा, काफी दूर है। अच्छा, नहीं काफी वहाँ से आए हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप लोग सारे प्रवक्ता हैं यहाँ पर, डेप्यूटी सीएम कौन होने चाहिए इस बार? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में
जो ऊपर का निर्णय होता है, हम सारे कार्यकर्ता उसी को मानते हैं और जो भी तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? क्या किसी को कोई है, कोई नाम है जो होना चाहिए? कौन होना चाहिए? डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम कौन होना चाहिए? डिप्टी सीएम तो हमारे समझ से सुरेश खन्ना जी को बनाना चाहिए। सुरेश खन्ना जी को बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है किसको बनाना चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी को रखना चाहिए। वो तो चुनाव हार गए थे। लेकिन वो संघ के क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और हमेशा हैं, इसके लिए उनको पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। उनको पीछे नहीं छोड़ना, नहीं, साथ लेकर चलना चाहिए और सबके साथ। दिनेश शर्मा को ठीक है, दिनेश शर्मा जी उनको भी रखना चाहिए। दिनेश शर्मा जी। तीसरा डेप्यूटी सीएम होना चाहिए या दो बहुत है? स्वतंत्र देव सिंह जी भी एक नाम है और क्योंकि संगठन की दृष्टि से उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और ये परिणाम जो आए हैं तो निश्चित रूप से उन्हें भी ये अवसर अगर मिलेगा तो वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा मैं पर वो तो प्रेसिडेंट है। नहीं, प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप में ही ये इलेक्शन हुआ तो उनको भी कुछ न कुछ इसका एक तरीके से प्रेसिडेंट तो अच्छा गिफ्ट देना चाहिए उनको। बताएं आप क्या कह रहे थे? मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में अरे नेता के जैसे क्यों बोल रहे हैं, जल्दी बताइए। नहीं, तीसरा डिप्टी सीएम बेबी रानी मौर्य होनी चाहिए। बेबी मौर्य होनी चाहिए। जी। मेरे समझ से में मोदी जी के प्रिय हैं, आईएएस है, प्रशासनिक क्षमता उनमें है। AK शर्मा सबसे अच्छे रहेंगे। शर्मा जी को होना चाहिए। देखिए एकदम से अभी पहले नाम नहीं निकल रहे, अब एक के बाद एक नाम। जिसे भी संगठन तय करता है उसी के लिए सब लोग जो है खुशहाली लाइक करेंगे उसे। अपनी राय तो दे सकते हैं ना। AK शर्मा होना चाहिए। ओके, लेट्स गो। मौर्य भी होने चाहिए। प्रसाद मौर्य, हाँ। दिनेश शर्मा जी होनी चाहिए। दिनेश शर्मा जी होनी चाहिए। दिनेश शर्मा जी। हाँ जी। चलिए, so this is the cadre. It's always very nice to speak to the cadre directly on who they want as their deputy CM as well, because they have to work under the deputy CM and the CM. Let's cut across right now to our reporters. Abhishek Mishra joins me, so does Samarth. Abhishek, a lot of speculation on the deputy CM's name. One confirmation has now come in that there will be 2 deputy CMs and not 3. Till yesterday, there was word there could be a 3rd deputy CM as well. So 2 deputy CMs in all probability, a reputation of Keshav Prasad Maurya and Dinesh Sharma. All right, we don't seem to have Samarth or Abhishek. We're going to try and connect to the both of them. But let's get in a few more reactions from people. कहाँ के हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं मोहान उन्नाव से। उन्नाव से आए हैं। प्रवक्ता हैं सारे? नहीं, हम लोग तो विस्तारक के तौर पे काम किए हैं पार्टी के विधानसभा विस्तारक के तौर पे। विधानसभा विस्तारक पूर्णकालिक है हम लोग। घर परिवार छोड़ के सिर्फ मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महरौनी। चलिए, एक चीज बताइए, आप लोगों को क्या लगता है डेप्यूटी सीएम कौन होने चाहिए? अभी तक नाम तो तय नहीं हुए। कोई भी बने, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, हम सबके बीच का बनेगा। होने चाहिए। आपके हिसाब से? सतन देव सिंह जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, जी, उनको होना चाहिए। प्रेसिडेंट ना बने रहे वो भी अब संगठन ना। Okay, that if I am not wrong, I'm trying to get to see who that is. Okay, no, there's too much of a rush. Okay, हाँ जी, बताएं। बेबी रानी जी, बेबी रानी मौर्य जी। जी वही। Her name, Baby Maurya, her name was earlier on being speculated as possibly being the 3rd phase where the deputy CM was concerned, but not quite, because the BJP, especially where the OBC vote, the non-Yadav OBC vote is concerned, has to play it politically correct. I want to bring in Rahul Srivastava. Rahul, if at this juncture, other than Keshav Prasad Maurya, the BJP was to give the 3rd deputy CM ship to the likes of Baby Maurya, where the non-OBC vote is concerned, and some of its leaders, like Sanjay Nishad and the other parties, have done quite well, they would be discontent. Yes, Preeti, definitely. That is why I think the BJP, last time around when Yogi Adityanath in 2017 was appointed as the chief minister or handpicked as the chief minister, the BJP thought that his Yogi background and his him being the head of the Gorakhdam Peeth might make him caste neutral. But eventually that did not happen, and the Thakur Rajput element became very predominant, and that is why the BJP at that time had a great amount of difficulty balancing the caste equations, and that is why Mr. Maurya, a non-Yadav OBC and a Brahmin, was brought in. If you see the composition of the BJP, Yogi Adityanath's Council of Ministers, the Brahmins remained and the upper caste remained the most dominant. In fact, if I'm not wrong, 28 of them were from the upper caste, and if you see the OBC
OBCs and the non-Jatav Dalits, they were given a lot of representation, but they were not given a lot of cabinet posts. They were largely relegated to the Minister of State portfolios, which does not really offer much traction to a politician. But definitely what one can say is this time around, if the BJP has to send out a signal that yes, the upper caste is important, but the loyalty of the non-Yadav OBCs, MBCs and the non-Jatav Dalits, that's where the BJP will have to send out a signal, because I think it is their vote which has made the big difference for the party, because they were newcomers as far as the BJP support group is concerned. And what we are being told, that there have been very hectic parleys between Amit Shah, JP Nadda, Yogi Adityanath, Swatan Dev Singh and several others. There have been several rounds of discussions. What we are also being told, that a lot of seniors are likely to be repeated. But as far as the Deputy CM issue is concerned, one is still not laying the cards on the table, primarily because there is no swearing-in ceremony, especially for a Deputy CM. It's just a nomination because the swearing-in is only for a cabinet berth. So one will have to wait and see who the BJP brings in and who the BJP drops. All right, Rahul, stay on with us. You know, what's interesting is we've been at the BJP headquarters and a lot of cadre, to chide their MLAs because they've, it's just their support base, are going on telling a lot of these MLAs that have won that Netaji phone on karke rakhiega, abhi phone aa sakta hai cabinet mantri banne ka. But I want to cut across right now to Samarth, who's joining us from home. Samarth, the action right now shifting from the BJP headquarters, it was full about an hour ago, the crowd's thinning a little, and now shifting to the CM residence. You join us from the CM residence, where what we are being given to believe is a chai party going on. Though those were some speculations that a chai party is going on, so far no big leader has come inside this particular residence. The cameraman Sandeep is showing you the visuals out here. I am present just outside the CM residence, where the entire security is obviously beefed up with Jawans of UP police out here and a lot of workers out here, what I can see. But there is no movement as such so far now. No and big leader has entered inside the premises of the CM residence. So these were all speculations, what we are getting from the ground. But as CM Yogi Adityanath is also inside the premises, he hasn't come outside, as the landing time of Prime Minister Narendra Modi is somewhere around 3 p.m. in Lucknow. So there will be movement, what we can see, the footfall or the movement will be happening after one hour or so. So, but currently the mood is electrifying in the city of Lucknow and also in the state of Uttar Pradesh. As I showed you before, I'll try to again show you the visuals out here behind the CM residence out here, that the entire area has been packed with the saffron colors, be it in the form of BJP flags, be it in the form of posters, be it in the form of cutouts, as you can see, of Amit Shah, of Yogi Adityanath, Prime Minister Narendra Modi, or the invitations of the SHAKTT Grahan, the swearing-in ceremony of UP CM, posted out here on the roads, on the posh localities of Lucknow. So these are the visuals coming from Lucknow, and it is not just here, as from where you are reporting. BJP office is also engulfed in this festive fervor, and apart from that, Ikana Stadium is also electrifying. So the current atmosphere, what we are getting from the ground in Lucknow, is electrifying, and the wait is on, like when the clock ticks the 4 p.m. time and the oath ceremony, the swearing-in ceremony time will, the event will start, when all the governors, CMs, deputy CMs from all over India who have been invited will come and gather their presence in the big day for you, because it's a history in the making. After 37 long years, CM face has been repeated, as CM Yogi Adityanath will be again the CM of Uttar Pradesh. Be it due to his good governance or law and order situation, people picked him. We also talked about the women voters who played crucial role in this BJP win. And what we are getting in the ministry, in the number of ministers could be somewhere around 50, and there could be some women face ahead of the Lok Sabha elections. Yes. Right. Well, I'm sure there'll be a lot of women faces in the cabinet this time, because as the BJP believes that it was the woman vote which propelled them, to the kind of majority that they got of 274. We have a lot of women cadres here. आप सारी प्रवक्ता हैं भाजपा की.
जी नहीं, हम प्रवक्ता नहीं है, हम डिफरेंट जिले से आए हैं। मैं हापुड़ जिले से हूँ और ये हापुड़ जिले की पूरी टीम है यहाँ पर। और हमारे हापुड़ जिले में 3 विधानसभाएं हैं और तीनों विधानसभा पर हमने विजयश्री प्राप्त की है। तो आप कहाँ से हैं? मैं चंदौली जिले से हूँ। आप चंदौली से आई हैं? हाँ, और हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं और हम लोग योगी जी के काले शपथ में आए हैं। अच्छा, आप क्या है, काडर है, प्रवक्ता? नहीं, अपना दल का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप अपना दल से हैं? जी। आप कहाँ से आई हैं? काशी से आए हैं, जहाँ से मोदी जी हमारे जिंदाबाद, वहाँ गोद भी लिए हैं। मैं योगी जी का कार्यक्रम है, मंडल अध्यक्ष हूँ। मंडल अध्यक्ष रेखा दुबे जी। आप कहाँ से आई? मैं जिला मंत्री हूँ, मैं हापुड़ से आई हूँ। जिला मंत्री? मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी। आप कहाँ से आई? मैं भी गढ़ विधानसभा से आई हूँ। गढ़ विधानसभा से आई हैं। आप क्या है? मैं जिला मंत्री हूँ, महिला मंत्री जी, हापुड़ जिले से। हापुड़ जिला से। चलिए, एक चीज बताइए कि इस बार कैबिनेट में कितनी महिलाएं होनी चाहिए? महिलाओं ने वोट तो दे दिया भाजपा को, अब बात आती है कि कैबिनेट में महिला होनी चाहिए। नहीं मैडम, दिया है, हम लोग सारे वोट दिए। हमारे 36 कमेटी है, 36 वोट दिलवाए, मैं गारंटी के साथ कहती हैं। आप बताइए, कैबिनेट में महिलाएं कितनी होनी चाहिए? मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं होनी चाहिए? मंडल में महिलाएं हम लोग और 40 महिलाएं हैं। नहीं, जो योगी जी अभी अपना कैबिनेट मंत्रिमंडल बनाएंगे, उसमें कितनी महिलाएं आनी चाहिए? डेफिनेटली ये जो जीत हमें मिली है वो महिलाओं की वजह से मिली है, न केवल महिलाओं कार्यकर्ता की वजह से मिली है, बल्कि उन महिला मतदाताओं की वजह से भी मिली है जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है। इसलिए मैं समझती हूँ, और बल्कि मुझे अपने संगठन पर पूरा विश्वास है और योगी जी पर भी पूरा विश्वास है कि हमारी बहनों को ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। लगभग 33% जो है वो महिलाओं का 33% से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 33% होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। कांग्रेस ने तो दिया था। कांग्रेस ने क्या दिया, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपने संगठन पर, हमारे बाबा पे हमें पूरा विश्वास है कि बिल्कुल कि वो महिलाओं को बहुत महत्व देते आए हैं और आगे भी महत्व देंगे। आप लोगों को लगता है आरक्षण देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए आपको, बिल्कुल देना चाहिए। आज ये जीत है तो सिर्फ महिलाओं की वजह से जीत है, क्योंकि महिलाओं ने ना कि बाहर से लेकर घर तक, रसोई तक पहुँचकर इस सरकार को बनाने में बहुत ही। एक चीज बताइए, जिला उपाध्यक्ष के बाद, जिला अध्यक्ष के बाद आप क्या करना चाहती हैं, कितना बढ़ना चाहती हैं पार्टी में? हम तो ये चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश में जाना चाहती है, आप जैसे बच्चे धूप में जल रहे हैं, तो महिलाएं अपनी शत्रु है कि उसको आगे जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए जी। हाँ जी। All right. I'm going to go into a quick break, but we want to end with what we just heard. You know, till now, the woman was a vote bank, always the kingmaker, never quite the king. This is the cadre lot of the BJP, and the first thing they say is they want reservation. For them, they want the money where their mouth is, and they want preservation, they want representation. They don't want to be a Zilla Adhyaksh anymore. Interesting conversations coming in from the Uttar Pradesh BJP headquarters. A quick break to stay with us. We'll catch you on the other side.